गाइस गर्ल्स माय स्टूडेंट श्रोताओं अस्सलाम वालेकुम मरहबन सबक खैर नजहा और प्रिविलेज भी आयु सस्रीकाल dear students today we are going to use the use of narration in speaking. Narration is always in two parts, the direct speech and indirect speech. Today we have very famous and short sentences in narration that are commonly spoken in day to day life. Let's start today's lesson. तलबा आज हम नरेशन के बारे में जानकारी करते हैं। नरेशन दो हिस्सों में होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में, और इसके दो पार्ट्स होते हैं। आइए आज छोटे छोटे जुमलों को देखते हैं जो जिनका इस्तेमाल अंग्रेजी बोलचाल में बहुत ज़्यादा मुश्तमिल है, और इन जुमलों को भरपूर तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। यू सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, सी है डायरेक्ट स्पीच। नरेशन में पहले डायरेक्ट स्पीच आती है। You see that direct speech, he said, comma, inverted comma start, how it's going, commas close, interrogative sign, एक क्वेश्चनरी स्टेटमेंट है डायरेक्ट स्पीच में। he said, comma, inverted comma start, how it's going, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, how it's going, कैसे गुजर बसर हो रही है, how it's going, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे गुजर बसर हो रही है, how it's going, कैसे चल रहा है। ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच जो है ये दो हिस्सों में होती है और इसे कॉमर्स के अंदर लिखा जाता है, इसे बराह रास्त गुफ्तगू कहा जाता है। लेट्स सी हाउ इट्स गोना चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसे बिलवास्ता गुफ्तगू में तब्दील करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। यू सी he asked said is replaced by asked, he asked, उससे पूछा, how it was going, you see now we have no commas when we change it to indirect, so the words with w and how are written as they are, how और h वाले जो अल्फाज होते हैं उनको वैसे लिखा जाता है, और जो सवालिया जुमला होता है उसे वही चेंज द इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू पॉजिटिव, उसे पॉजिटिव मुस्बत जुमले में बदल दिया जाता है, अफर्मेटिव जुमले में बदल दिया जाता है। You see that he asked how it was going, उसने पूछा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे गुजर बसर हो रही है। how it was going, कैसे चल रहा था। now you see here we have was here because the outer part is in the past, so according to rules when we have outer part in the past and changing the direct speech, प्रायरास्त गुफ्तगू को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की जो तब्दीली होगी, तो how it's going is जो है ये was में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब स्टेटमेंट है, इसके अंदर कॉमास नहीं है। so he asked how it was going, उसने पूछा कैसे चल रहा था, कैसे गुजर बसर हो रही थी, उसने पूछा कैसे चल रहा था, कैसे गुजर बसर हो रही थी। This is came to past because the outer part is in the past. According to rules, if the outer part is in the past of the statement in indirect speech, so interior verb will change to the past. That's why we write past here. Let's move to the next statement. आइए अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं। You see my students, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच का जुमला है she said comma inverted comma start, who is here comma close interrogative, यहाँ पर कौन है, उसने कहा who is here, यहाँ पर कौन है। he said comma inverted comma start, who is here comma close interrogative sign, this is also an interrogative statement। ये भी एक सवालिया जुमला है, और देखिए यहाँ पे ये कॉमर्स में है। फर्स्ट पार्ट he said, उसने कहा, पूछा, comma inverted comma start, who is here, यहाँ पर कौन है, comma one interrogative sign। he said who is here, उसने कहा यहाँ पर कौन है। let's see how it's gonna change to indirect speech। आइए देखते हैं कि बिलवास्ता गुफ्तगू में इसकी तब्दीली कैसे होती है। उसकी स्टूडेंट indirect speech, she asked, उसने पूछा, उसने पूछा कि commas are removed and w and h words, remember this point that w and h words are written as they are in the indirect speech, so who will stand here as it is, and the particular words, there are certain particular words like here that this will change to there according to the rules of that speech. So there is change into there, so who, there, where, again present tense is plus form is will change to the past, that's why we write it where। why was it was अंदर किसको लिखा, क्योंकि प्रेजेंट से था ये, और जब हमने इसे वास्तव में चेंज किया तो वाइट के मुताबिक रूल्स के मुताबिक इसको
inside the comma. Let's see how it's going to change into interest speed. पहले देखते हैं कि वास्तव में इसमें कैसे change होती है. Again we say here interest speed in a